Thank you, sir. So here it basically, I hope that all of you have got the idea, right? What we are discussing. Yes, sir. Yes, right. So this So particular thing is, tell sorry me. for interruption, but you tell us to remind yesterday lecture screenshot. Yes, yes, yes. Send. You have sent the message, right? Okay. Yes, yes. I have got the message in the chat. Okay. So I will be sharing. Let me discuss this particular concept, and after that, I will share the screenshots. Okay. Santosh, Jyoti, Yes, sir. Yes. Jyoti Yes, is sir. Okay. there. Okay. Yes, Okay. sir. Let me discuss. Finish this part, and after that, I will discuss. Okay. I will share Okay, it. sir. Okay. So here, basically, you are having a situation which is pretty much common these days because of the corona pandemic situation. Always right now, work from home option you are getting. Okay. So what you are doing, you are sitting at home at your laptop and you are connecting via internet to your office building where you are having the office machine, and this office machine you are basically using it from your home laptop and you are doing your work in the office. This is what is going on. Both your home and the office building is connected to internet and you are accessing either one of these two applications in Windows based machines like remote assistance and remote desktop, and you are basically remotely accessing these machines. Okay. Now this is very much happening. Okay. Earlier also, but post pandemic, okay, the corona situation, this particular thing is very happening, very much happening. Okay. So what exactly we are having? These applications are there in any Windows based machines, whether you are using Windows 7, Windows 8, Windows XP, Windows 2, Windows 10, uh, like what Windows Server operating system. In any operating, okay, Windows based operating system, you will get these two applications. Now, this application called Remote Assistance always is used for providing technical support by companies. Okay, technical support means, let's say that you are the user who is using this laptop, or this is the company. Okay, let's say that this is your laptop which you have purchased very new, okay, brand new laptop. Now, this laptop, like what you are facing some issues, okay, with this laptop, maybe some hardware problem or something is not working properly, you are facing some issues. So what exactly you are doing, you are calling the customer care of the company. Now here exactly you are having technical engineer sitting in his machine. When you call the customer care, this is when exactly the customer care, he will tell you that, okay, let me connect to your machine and see what exactly is the issue. He will tell you. So what exactly you are doing, you are giving him remote assistance over here. Okay, from his machine he will give you assistance, he will give you the support. Now for what reason you are giving the, like what, giving remote assistance? Because from this particular machine, this user, this technical engine support engineer wants to access your machine to give you assistance. That is why you are giving him remote assistance support. Okay. So this remote assistance always is used for providing technical, like what, support related things. Okay, technical engineers most of the time they are getting connected to their customers, okay, laptops, desktop machines, to fix their problems they need to connect. Okay, because it is not possible for every single engineer to visit the customer location and find out what exactly is the issue happening, like Dell, HP, okay, Lenovo, you are having Asus, you are having Vivo, all this, they are like what, I guess Vivo is also manufacturing laptops, right? Yes or no? Vivo laptops, anyone have seen? Or No, only sir. smartphones? No. This smartphone. No, sir. There is no Vivo laptop. Let me just check it. Just hold on. I hope that I have heard somewhere Vivo is also manufacturing laptops. Okay, MI laptop, I guess, right? Yes, It is MI is there. MI. Yes, MI is there. Vivo, I very don't know. famous in But China. let me check. Let me check this. Hold on. Maybe manufactured in China. Anything will happen.
MI already is manufacturing. There are lots of products, MI products are Yes, available. sir. Vivo laptop. Laptop is there, I guess. Yes, sir. Uh, no, 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 Oh, no. These are basically Vivo books and all these things, but not these are shoes. No, I guess not. I guess not. Vivo Yes, Core. Vivo No, make no, no, no. laptops. So over here you can consist of laptops. Okay, Vivo books. Okay. And association with SS. So maybe it may be true. Okay, so anyways, I'm not sure completely because there are lots of things, okay, with the same type of product name, Vivo, okay. But anyways, you can understand, right? Okay, because the thing which I'm not sure, because if I talk about that, it will be absurd actually. Okay, later if you find out that this information is not true, at that time you will be blaming the like what your instructor only. Yes or no? Yes, sir. You will say that like what sir has told us and like what we are finding exactly opposite things. Those things you will be saying. Yes. Yes, sir. Uh, so it is better to verify first and after that only say that. Okay, so all these companies laptops, okay, what we are having currently available in the market, these laptops desktops always they face different types of issues, okay, because these are the machines what you are going to see in the company. So when they are working, okay, when the users are working with these laptops, desktop machines, this is when exactly they're facing problems. Okay, so like what as a technical engineer, okay, you will be basically providing the support. Okay, so maybe you are sitting in certain location, the problem is happening on another location in another building, okay, in which you are not present. So always you are just connecting. Using remote assistance, you can connect anywhere, but the main idea of using remote assistance is to provide technical support to the remote user. Okay, whoever is having the issue, you are providing the support from this location. Okay, but remote desktop we are also having. The remote desktop is used for different purpose. Specifically, when you are getting your work from home option. Okay, means you are you are located over here and your office machine is located over here. Okay, since we cannot go to work, okay, because of the corona situation, we are using our laptops, our desktops. This is our home based laptops, desktops, and we are connecting to our office systems, and from that system we are doing our work in the office. So we are not doing our work from the laptop, we are doing our work from like what, from this system only. Okay, the thing that like what you are seeing, the difference is the means physically you are present over here, but logically you are present over here. Logically you will do all the work. It is simply like what you are sitting in front of this machine. This is what you are having. You are sitting just in front of this machine, but physically you are located over here. So logically you are accessing this machine and you are doing all the work. Means total access is given to you, whatever you want. If you want to shut down this particular machine, you can do that from this machine. This is the type of privilege you are getting, okay, power you are getting. So this is very much important, that all this informations like remote assistance and remote desktop, this type of applications always is there free of cost. You don't have to install it separately. These things are coming free of cost. When you install Windows operating system, always it is there. Okay, but remote assistance and remote desktop, you are having two differentiations. Okay, number one differentiation is this one is used for technical support. Okay, but this one is used for directly accessing a particular remote machine completely. Means whatever you want you can do on this machine. No permissions are required, nothing. Full access, remote desktop. Okay, full access is given to you. But remote assistance is not like that.
whatever permission I give in my machine, this particular technical engineer can only access that. If I give the permission that okay, he can access only this folder, but he cannot open this file, then he can only do that thing only. He will get that permission only. This type of permissions are given when you are using remote assistance, but remote desktop doesn't follow the same process. This is why exactly this particular remote desktop, it is a little bit risky, but at the same time it is very flexible because you are completely managing a particular system by sitting at home. Okay, but remote assistance is like what is used for technical support related things, because it is permission related, means whatever permission you are giving, this engineer will only be able to use that permission to do the work at the system. Okay, this type of work is always be given. Okay, when you are having this type of permissions. Understood. Always remote assistance is used for technical related support, and remote desktop is used for uh, completely accessing any system remotely. You are accessing. Most of the time it is used in the company's network environment. Okay. This is what you are having, everyone. The remote assistance and remote desktop. Okay. So just make a heading of remote assistance and remote desktop. Okay. Make a heading of remote assistance and remote desktop, all of you. Okay, everyone finished? Remote assistance and remote desktop, is it done? Heading? Hello? Yes, sir. Yes, yes. Tell me. Tell me, tell Hello, me, sir. tell me. सर हम वन टाइम पे कितने मतलब मशीन्स इस पे ले सकते हैं सर, मतलब रिमोट पे ले सकते हैं एक ही मशीन को ले सकते हो। वन एक टाइम ही में मशीन, एक ही? हाँ, एक ही मशीन को ले सकते हो अभी। ओके ये मतलब जो ये सारे जो एप्लीकेशंस होते हैं ना, ये एक एक 1 to 1 होता है। ठीक है, जैसे कि तुम्हारा जो मशीन है, जैसे कि तुम्हारा 2 मशीन है, एक लैपटॉप है, एक डेस्कटॉप है। अभी तुमने लैपटॉप लेके कौन सा भी जगह पे तुम चले गए, ठीक है। अभी तुम्हारा डेस्कटॉप पे तुम कनेक्ट करना चाहते हो, ठीक है, जो कि तुम्हारे घर पे है, तो फिर वो आराम से कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, रिमोट वन टाइम डेस्कटॉप पे यूज कर लो। वन ही मशीन कनेक्ट कर सकते हैं, ऐसा है ना? वन टाइम पे हम लोग ऐसे ही करते हैं, मल्टीपल यूजर्स हम लोग एक मशीन के साथ कनेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि ये तो लैपटॉप है। लैपटॉप पे एक टाइम पे एक ही यूजर ही तो यूज कर सकता है ना। हाँ जस्ट इमेजिन कर लो कि तुम्हारे पास तुम्हारा लैपटॉप है, अगर 2 आदमी एक ही लैपटॉप से काम करे तो काम होगा? हाँ, नहीं नहीं होगा ना। ये बस मतलब फिजिकली तुम अवेलेबल नहीं हो, लॉजिकली तुम अवेलेबल हो तुम्हारे सिस्टम के सामने। तुम असल में तुम होम पे हो, तुम्हारे घर पे हो, लेकिन लॉजिकली ऐसा लगेगा कि तुम डायरेक्टली इस सिस्टम के सामने बैठे हुए हो और इस सिस्टम से काम कर रहे हो। ये लॉजिकली है। ओके ओके सर रिसर्च पर्पस के लिए हम लोग सुपर कंप्यूटर तो एक्सेस ले सकता है ना, मल्टीपल मशीन्स, मल्टीपल सिस्टम को। अभी सुपर कंप्यूटर के बारे में बात कर रहे हो तो फिर अब क्या कहें, और कुछ भी नहीं कुछ मतलब भी ऐसे कहने ही का नहीं। ऐसे ही मेरे पास तो शब्द नहीं है, मैं कैसे कैसे बयान करूँ ये। जनरल नॉलेज के लिए। सुपर कंप्यूटर के बारे में बात कर रहे हो तो फिर तो मतलब बात तो दूसरे लेवल का ही हो जाता है।
तो ये हम जो लेवल पे डिस्कशन कर रहे हैं वो लेवल ही नहीं रहता उस पे, वो दूसरे लेवल पे चला जाता है। रिमोट असिस्टेंस में क्या है, इसका ये होता है, हाँ, टोटल रिमोट एक्सेस नहीं असिस्टेंट होता में ना मतलब सर। क्या देखो ऑफिस जा हाँ देखो कौन कितने नंबर ऑफिस ऑफ से एक्सेस कर यूजर्स, सकते कितने नंबर ऑफ यूजर्स कनेक्ट कर सकते हैं, साइमल्टेनियसली कनेक्ट कर सकते हैं या फिर एक के बाद एक कनेक्ट कर सकते हैं, ये सारे जो सेटिंग्स होते हैं उस पर डिफाइन किए जाते हैं। हम लोग ऐसे टाइप के एक्सेस नहीं देते, ठीक है। मतलब ऑफिस पे भी जब काम करोगे तो तुम्हारा खुद का अपना सिस्टम होगा, ठीक है, हम्म जो कि ऑफिस का ही सिस्टम है, तुम्हें असाइन किया जाएगा। हम्म अभी तुम्हारा तुम्हारा सेशन रहा जैसे कि मान लो कि सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक हम्म तुम्हारा सेशन है, ऑफिस टाइमिंग है। तो उसके बाद 5 बजे से रात को मतलब जैसे कि 2-3 बजे तक रहेगा या फिर 12 बजे तक रहेगा, ठीक है, दूसरा सेशन रहेगा। तो उस टाइम पे दूसरा आदमी यूज करेगा, ठीक है, हम्म कोई भी यूज करेगा, ठीक है, लेकिन ये सिस्टम मतलब आइडल नहीं रहेगा, कोई भी यूज करेगा सिस्टम को। तो तुम्हारा जो नेक्स्ट, ये तो शिफ्ट वाइज पे चलते रहते हैं। हम लोग एक शिफ्ट हम्म कवर करते हैं, उसके बाद हम चले जाने के बाद दूसरा शिफ्ट होता है, वो कवर करते हैं, फिर हम लोग कवर करते हैं, ऐसा करके रोटेट होता रहता है, हम्म ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ यूजर्स कनेक्ट कर रहे हैं किस सिस्टम से। ये सारे मैं सेटिंग्स पे डिफाइन होते हैं, सेटिंग्स पे डिफाइन किया जाता है। लेकिन एक सिस्टम पे हम लोग एक टाइम पे एक ही यूजर को कनेक्ट करते हैं। जैसे कि तुम अगर काम कर रहे हो अभी, तो तुम ही असाइन हो गए उस पे, तुम ही कनेक्ट कर हाँ सकते हो। हाँ दूसरा कोई उस टाइम पे दूसरा कोई कनेक्ट करना चाह रहा है तो फिर ये कंपनी में नहीं करने देते, क्योंकि ओके तुम्हारा जो तो ऑफिस का टाइम में है उस टाइम पे तुम ही सिर्फ एक्सेस कर सकते हो, कोई दूसरा एक्सेस नहीं करेगा। हम्म क्योंकि तुम्हारा लॉगिन चलो। आईडी तुम्हारा होगा ना, लॉगिन आईडी पासवर्ड ये तो तुम्हें हाँ यूज करके तुम्हें हाँ लॉगिन करना है ना सिस्टम हाँ पे। हाँ, वो तो हाँ वही है। तो सर ये रिमोट असिस्टेंस में क्या हम लोग कैसे काम करते हैं, मतलब रिमोट असिस्टेंस रिमोट में असिस्टेंस पे बेसिकली टेक्निकल जो सपोर्ट होता है वो दिया जाता है, जैसे ठीक है। प्रॉब्लम मान लो कोई ये हाँ प्रॉब्लम आया प्रॉब्लम, उसको सॉल्व हाँ करें जैसे कनेक्ट कि करके। मान लो कि तुम्हारा तुमने एक लैपटॉप लिया है, ठीक है, डेल का लैपटॉप हम्म है। हम्म अब डेल का लैपटॉप लिया है तो फिर हम्म कुछ दिक्कत आ गया, मान हम्म लो कि कुछ काम नहीं कर रहा है, तो फिर क्या करोगे? अभी वारंटी पे भी है, हम्म, कंपनी पे तो सारे मशीन तो वारंटी पे रहते हैं, ठीक है। हाँ हाँ तो ये क्या मतलब क्या करोगे उस टाइम पे जब देख रहे हो कि तुम्हारा लैपटॉप काम नहीं कर रहा है ठीक तरीके से? मैं कस्टमर, कंपनी को कॉल कर कस्टमर हाँ कस्टमर। कस्टमर केयर को कॉल कॉल करोगे ना। तो व्हेन हम्म यू आर कॉलिंग द कस्टमर केयर, तो क्या क्या बोलोगे उसको कि भाई मेरा लैपटॉप पे प्रॉब्लम आ रहा है, ये मैं कर नहीं हम्म पा रहा हूँ ठीक तरीके से, तो फिर ये हाँ इसका तो मुझे सॉल्यूशन चाहिए, ये तो सॉल्व करके हाँ देना देना है। नया ब्रांड हम्म, न्यू लैपटॉप लिया है मैंने, मतलब ये सारे हाँ तुमने कुछ हाँ इंफॉर्मेशन दे दिए कि भाई मतलब बंदा जो है वो इमोशनल हो गया, ठीक है, कि पूरा जो जो है ये नया वाला सिस्टम है और नया वाला सिस्टम पे ऐसा प्रॉब्लम आना नहीं चाहिए, ये मतलब पूरा बिलीव करवा दिया उसको, हम्म ठीक है। तो फिर वो क्या करेगा, वो तुम्हें बोलेगा कि मुझे एक्सेस दो अपने सिस्टम पे, हाँ ठीक है, अपने सिस्टम पे मुझे एक्सेस दो, मैं देखता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है एक्चुअली सिस्टम पे। तो वो तो ऑफिस पे बैठा है। हम्म, अभी हाँ जब तुम एक्सेस दोगे तो तुम ये सेट करके दे सकते हो कि क्या हाँ क्या वो कर सकता है तुम्हारे सिस्टम पे। जैसे कि तुम्हारे हाँ सिस्टम पे तुमने सी ड्राइव, डी ड्राइव, वी ड्राइव, किसी ये पे तुमने जैसे कि कुछ डॉक्यूमेंट्स रखा हुआ है, कुछ कौन सा ड्राइव पे तुमने कुछ जैसे कि फाइल्स, इंपॉर्टेंट फाइल्स है, पिक्चर्स है, डॉक्यूमेंट्स, पर्सनल डॉक्यूमेंट्स तुमने रखा हुआ है जो तुम शेयर नहीं करना चाहते हो, हाँ ठीक है। तो वो जब हम्म एक्सेस लेगा, नॉर्मली क्या होता है कि जब एक्सेस लेता है तो सारे सब कुछ वो देख सकता है तुम्हारे सिस्टम पे क्या है नहीं, हम्म, ठीक है। यस और सर जब वो मतलब रिमोट असिस्टेंस से एक्सेस लेता है तो फिर उसको मतलब डिफाइन किया एक्सेस जाता नहीं है कि उसको। हाँ डिफाइन किया जाता है कि क्या क्या वो कर सकता है तुम्हारे सिस्टम पे। हम्म, मतलब हम लोग सेट करके देते हैं कि भाई तुम सी ड्राइव देख सकते हो, अगर देख सकते हो तो हाँ ठीक है, अगर डी ड्राइव मतलब देखना नहीं चाहते तो फिर नो, परमिशन हम लोग नहीं देते उस पे। हम्म, जो काम के लिए जो चीज चाहिए बस उस पे फोकस रहना हाँ है, ठीक है, आजू बाजू देखे सर का नहीं है। सर मेरा एक क्वेश्चन था सर। गेटिंग माई पॉइंट, यू आर हेलो। गेटिंग माई पॉइंट, यस सर राइट।
Sorry for my Hindi, okay? My Hindi is not that good. हेलो Tell me. सर, मेरा एक प्रॉब्लम था, मतलब एक क्वेश्चन था सर। अगर मैं आपका मतलब लैपटॉप में रिमोट पे लेना चाहूँ तो अगर उसमें दो मतलब दो अकाउंट में साइन इन किया है आपने, एक आपका है और एक एडमिनिस्ट्रेटिव है, तो मुझे दोनों का भी ये लेना पड़ेगा ना सर? तुम्हारा जो अकाउंट जो होगा वो तो नहीं नहीं, तुम्हारे आपका तो रिमोट पे लेना चाहता हूँ सर मैं। हाँ हाँ हाँ। तो आपके लैपटॉप पे आपने दो अकाउंट साइन इन किए, एक आपका है और एक एडमिनिस्ट्रेटिव, तो दोनों को भी मतलब मुझे एक्सेस लेना पड़ेगा ना? हाँ ऑब्वियसली तुम्हें जो मशीन पे तुम्हें एक्सेस लेना है उसका इंफॉर्मेशन तुम्हें जानना पड़ेगा, जैसे कि यूजर नेम क्या है, पासवर्ड क्या है, क्योंकि कौन सा भी सिस्टम पे जब लॉगिन लेते हो, जैसे कि विंडोज बेस्ड सिस्टम, तो फिर उस पे तो नहीं नहीं यूजर सर, नेम पासवर्ड हेलो, डाल के लॉगिन लेते हो ना। आपका हाँ विंडोज पे लॉगिन होगा तभी भी आपका वो एडमिनिस्ट्रेटिव का लॉगिन, मतलब उसका ये पासवर्ड वगैरह मांगेगा ना जब मैं कुछ करना चाहूँ तो, ऐसा? हाँ पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड नहीं मांगेगा तो कोई मतलब कौन सा भी टाइम पे कौन सा भी कोई कौन सा भी सिस्टम पे लॉगिन ले लेगा ना, ये तो प्रॉब्लम वाली बात हो जाएगी उसके बाद। अगर पासवर्ड वगैरह नहीं मांगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो जैसे कि हम्म, कंपनी पे इतने सारे थाउजेंड्स ऑफ सिस्टम्स एक साथ रन कर रहे हैं, अगर मतलब कौन सा भी सिस्टम ने सडनली लॉगिन ले लिया कौन सा भी सिस्टम पे, तो वो दिक्कत आ जाएगी, इंफॉर्मेशन लीक हो जाएगा ना, ऐसा है। ये तो सिक्योरिटी ब्रीच है, डाटा नहीं सिक्योरिटी सर, क्या हुआ रिलेटेड था इश्यूज सर, है। मैंने, हेलो हाँ हाँ बोलो सर, बोलो। मैंने एक फ्रेंड का लैपटॉप रिमोट पे लिया था सर। हम्म। तो उसको मैंने विंडोज में लॉग इन किया था, पर वो जब मैं कुछ करना चाहूँ तो उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव का जो पासवर्ड है वो मांग रहा था सर। हाँ ये तो परमिशन का इशू है। वो पासवर्ड क्यों मांग रहा था, क्योंकि तुम जिस यूजर से लॉगिन लिए हो वो उसका हम्म एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेज नहीं है। मतलब जो काम करना चाह रहे थे उधर पे उस वाले हम्म सिस्टम पे, वो काम करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर लेवल के प्रिविलेज होना चाहिए तुम्हारे यूजर अकाउंट के पास। वो नहीं था, वो उसके उसीलिए मांग रहा था कि एडमिनिस्ट्रेटर ओके। का पासवर्ड दो। और वो जो एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड है वो उस रिमोट सिस्टम का एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड तुम्हें तुम्हें देना था उधर। ठीक है, तुम्हारा लोकल सिस्टम का नहीं है, वो रिमोट एक्सेस जो है रिमोट सिस्टम का, उस रिमोट ओके सिस्टम का एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड देना है। ओके तो ओके, थैंक हमेशा विंडोज जो सिक्योरिटी है, विंडोज का जो सिक्योरिटी है, ये ही सारे चीजों पे काम करता है। कौन सा भी सिस्टम पे तुम कौन सा भी सिस्टम ओके एक्सेस कर सकते हो, लेकिन हमेशा यूजर नेम पासवर्ड डाल के ही एक्सेस करना पड़ता है। ठीक है, अगर तुम्हें जो सिस्टम है उसका यूजर नेम पासवर्ड मालूम है तो फिर आराम से एक्सेस कर सकते हो, यू। लेकिन विदाउट यूजर नेम पासवर्ड एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, ओके सर। तो ये तो इंफॉर्मेशन मतलब जानना जरूरी है। ओके एवरीवन, सो रिमोट असिस्टेंस, ऑल ऑफ यू हैव मेड हेडिंग रिमोट असिस्टेंस। यस सर। यस सर। Okay, so remote assistance refers, write it quickly. Remote assistance refers to a connection that is intended intended to provide technical support from a distance. Full stop. In this mode, comma, a user in this mode, comma, a user who is sitting a user who is sitting at his or her computer at his or her computer can invite
can invite a technician to see what is happening. Damini is silent today. What happened? Nothing, sir. Huh? It is the last session, huh? Last of my session. That is why silent. Huh? No, sir. How are you? First of all, I'm fine, sir. revision is going on properly or not? Yes, sir. Yes. Properly revise, okay? Yes, Don't sir. neglect anything. Saying that it is the basics, so I don't have to give so much time to it. Don't even think about like that. Yes, sir. In case of I got any queries, I will ask. Anything, whatever you are having, always, whichever session, okay? And this Okay. applies to all of you, everyone. Okay, because after my session, whichever, like what, whoever instructor will be giving you the training, okay, make sure that you utilize, okay, the time what you Okay. are giving, okay, Okay, to sir. each and every single session. If you are not understanding, ask, always ask, okay. This is your career what you are setting up by asking only, and Yes. Sir. always make sure that like whatever you understand, okay, the concepts very well. Okay, don't follow someone has given something, okay, don't follow the notes properly, okay, and don't say it or don't repeat it. This is not good. Whatever notes are given to you, just read it, develop your own version, your own understanding of that concept, and present it to anyone, okay, your own version of that particular concept. This is what exactly, like what everyone wants to hear. This is what the interviewer wants to hear. What do you understand out of a particular concept? Because when he is asking you that question, he already knows what is it. But what Yes. exactly is the knowledge you have got out of that concept? What is your perspective about that concept? This is what exactly they're asking. Okay, so don't say something which someone already knows, like predefined, like memorizing things and like what you were saying. Don't do it like this. These notes I'm giving to you, I could have told you that, okay, go to Google website and like what search it and find it. Over there, you will find all these things. What is the point? The main point is whatever understanding I have got, I'm just sharing with you through these types of notes. That's it. I'm not telling you that you have to follow the exact same notes, okay, throughout your entire like what entire studying process. You can basically just take the reference of my notes and you can build your own version about the concept, and you can present it whenever they are asking you these things, okay? Or you can develop your own understanding out of that. This is what is important. Waiting about the Yes, sir. Yes, sir. So simply just follow this guidelines and instructions from your short-term instructor. Yes, sir. Okay, so all of you, yes, in this mode, we are having a user who is sitting at his or her computer can invite a technician to see what is happening on their screen remotely. Up to this, I guess all of you have written, right? Sir, what is happening after that? On the screen remotely. Full stop. Rest of the participants are thinking that why sir is not communicating with us and all this. Only sir is communicating to only few candidates. Why sir is not communicating to us? Might be you guys might be having the question, right? Yes or no? No, sir. Uh, yes, Jyoti, Kavita, Pritam, Ashraf, Gayatri. No?
Not for a single time this type of question hasn't come into your mind. Why sir is not communicating with us? No? Okay. Anyways, everyone, because see, the thing is, lots of participants are there, right? So I'm just like what randomly I'm asking. Okay, so that's it. You can always Hello. ask, right? You can always ask your questions. Yes, Shubham, tell me. सर ये रिमोट असिस्टेंस वो कैसे देते हैं, वो आप एक बार दिखा सकते हैं सर? रिमोट असिस्टेंस डेस्कटॉप वही मालूम मैं, है सर, पर असिस्टेंस हम हाँ वही मतलब उधर पे मैं भी ये करूंगा, ऑप्शंस दिखा दूंगा, ठीक है? कि मेरे सिस्टम पे नहीं होगा, क्योंकि मेरे सिस्टम पे मेरा ऑलरेडी कनेक्शन है ना इंटरनेट पे, तो फिर दिक्कत होगा क्योंकि रिमोट असिस्टेंस डिसेबल्ड किया हुआ है। नहीं 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 सर, अभी हाँ आप एनीवेयर मतलब कनेक्ट करते ना, तो उधर मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि मैं असिस्टेंट दे रहा हूँ या डेस्कटॉप ऐसा? हाँ वही वही मैं इधर पे इमेजेस है, तुम गूगल पे जाके इमेजेस पे मतलब मैं दिखा दूंगा रिमोट असिस्टेंस असिस्टेंस पे जब कनेक्ट होते हो तो फिर कैसे दिखता है वो इंटरफेस, ठीक है? ओके वो ओके तुम्हें गूगल गूगल इमेजेस पे मिल जाएंगे, रिमोट असिस्टेंस जस्ट टाइप करो, उधर से ही मिल जाएगा कि कैसा टाइप का इंटरफेस, कैसा टाइप का एप्लीकेशन होता है, ठीक है? ओके, वो दोनों अलग अलग एप्लीकेशन है सर? हाँ दो अलग अलग एप्लीकेशन है। रिमोट डेस्कटॉप डेस्कटॉप का सेपरेट एप्लीकेशन आता है और रिमोट असिस्टेंस का सेपरेट आता है। ओके 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 एवरीवन, सर सो सर फॉर हाँ फॉर चलो। वर्क फ्रॉम होम पर्पस द कंपनी यूज वीपीएन ना सर? हाँ वीपीएन, वही तो क्या कह रहे हैं, रिमोट डेस्कटॉप होने से भी वीपीएन से ही कनेक्ट हो गए तो, ठीक है? ओके। उसका सॉफ्टवेयर डिफरेंट होता है। Okay, everyone. So, what is happening on the screen remotely? Full stop. The remote user receives the remote user receives an invitation from the host and cannot log in. Excuse me, sir. Tell me. Actually, I have this sometime Yes, which particular after thing? remote Remotely. screen Full stop. remotely. Okay. The remote user, the remote user Hmm. receives an invitation from the host and cannot log in Okay, sir. Thank you. without responding to it. Full stop. Paragraph change, everyone. All of you finished? Everyone finished? यस सर. Paragraph change. The process for establishing the process for establishing a remote assistance connection. The process for establishing a remote assistance connection are as follows. Point number one. Point number one.
The host user. Pritam. Pritam. Yes, sir. Yes, Pritam. Writing properly. Yes, yes, sir. Let me know any questions are there. Then just let me know about it. Okay. If you have Okay, missed sir. anything, any concepts you missed, screenshots, everything you have taken, right? Yes, yes, all are taken, sir. Okay, very good. Preparing, right? Preparation is good or not? Yes, sir. Good. Good enough. Okay. Revision, always do the revision. 15 minutes, 20 minutes time on a daily basis. Reserve it for revision. Understood? Yes, sir. Okay, very good. So, number one point, everyone. The host user sends an invitation. The host user sends an invitation to the technician. The host user sends an invitation to the technician. Second point, the technician using the remote computer must must accept this invitation in order to gain access, gain access to the host computer. Number three, depending on the configuration command, depending on the configuration command, the host user may choose Sir, depending on the host configuration. configuration. Depending on the configuration command, the host user may may choose to simply share their screen or give full control over to the technician. Number four, the connection continues.